Hello students, today we will start triple integral using spherical coordinates. So बेटा ਆਪਾਂ spherical coordinates ਦੇ ਨਾਲ triple integration solve करने हैं बेटा question. So first बेटा एक मैं sphere consider कर लिया this. Okay. Not good. So this. This one y-axis, x-axis, z-axis, this one is radius, makes angle phi. Let beta OP consider R and phi angle makes with the z-axis. Okay. This phi makes with the z-axis. Draw M. MP perpendicular to XY plane. बेटा MP किस दे perpendicular है XY plane. Join this. This angle is theta. Okay. बेटा first this perpendicular. This is 90 degree. Okay. This one is a 90 degree phi, this angle is phi, this one is a 90 degree minus phi. Okay. We right angle triangle beta this OMP. This angle is 90 degree minus phi. Okay. Then this one is R. Then OM upon OP. This one equal to cos 90 degree minus phi sin phi. So OM equal to OP कितना R sin phi. Okay बेटा. Then MP upon OP. This one is sin 90 degree minus phi. Cos phi. So MP equal to R cos phi. Okay बेटा. So we have OM. This one कितनी वैल्यू आ गई R sin phi. ओके बेटा. एंड MP P पॉइंट की है बेटा अपने एक्स वाई जेड. सो Z इक्वल टू R cos phi. फर्स्ट बेटा मेरे में रिजल्ट आ गया Z. देन वी फाइंड X एंड Y. देखो OM इन XY प्लेन. ओके. मेक्स दिस एंगल थीटा. देन ड्रॉ पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस. देखो बेटा एक मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता क्यों बेटा. देखो इन xy plane this one is a xy plane. We draw any line parallel to y axis perpendicular on x axis. So this one is 90 degree. Okay. Then triangle बेटा triangle OMQ. This one is 90 degree. This one is theta. Okay. बेटा we have देखो बेटा O क्या होता है बेटा 90 degree M. Okay. क्या होता है एंगल कितना बनता है बेटा 90 degree. OM किस दे इक्वल है बेटा पहले R sin phi. So बेटा OQ upon OM. Okay. Cos theta. So बेटा this one OQ की है X. OM की सॉरी MQ की है Y. OQ is X, MQ is Y. X, Y and this one is Z point is X, Y, Z. OQ, OM R sin phi cos theta. So we have X, R sin phi cos theta. Then Y, MQ upon R sin phi beta. Perpendicular upon hypotenuse. This one is sin theta. So y equal to R sin phi sin theta. So we have X equal to R sin phi cos theta. Y equal to R sin phi sin theta. And Z equal to R cos phi. Okay बेटा.
क्लीयर है बेटा। फर्स्ट जो अपने बेटा इस किया बेटा इस ओके। इन दिस केस बेटा फाई जो अपने फाई एंगल कंसीडर किया बेटा इन दिस वन एंड थीटा ओके बेटा। सो फाई एंगल डज नॉट इन बेटा फर्स्ट ओके डायग्राम। नेक्स्ट जो फाई एंगल है बेटा डज नॉट इन एनी पर्टिकुलर प्लेन। देखो फाई एंगल मूव्स दिस ओके दिस ओके। सो क्लियर है बेटा फाई एंगल लाइज बिटवीन 0 to पाई ओके बेटा। जो फाई एंगल है बेटा मूव्स पॉजिटिव जेट डाउनवर्ड दिस वन ओके this. So phi lies between 0 and phi and theta as polar coordinates okay. Theta lies in xy plane like polar coordinates beta. Polar coordinates beta then theta lies between 0 and 2 pi okay. Theta lies between 0 and 2 pi. So beta theta lies between 0 to pi and phi 0 to okay beta. First we find this result and Jacobian. Beta Jacobian किसके इक्वल होता है बेटा? Because we know that triple integration v f x y z dv change it to f x r sin phi cos theta y r sin phi sin theta z r cos phi and Jacobian dr d theta d phi. First Jacobian beta Jacobian okay. This one is equal to del x y z upon del r theta phi okay. This one equal to first beta del x upon del r sin phi cos theta okay beta. Next del x upon del theta minus r sin phi sin theta okay. Del x upon del phi r cos phi cos theta okay beta. Then del y upon del r del y upon del r sin phi sin theta okay. Del y upon del theta del y upon del theta beta del y upon del theta r sin phi cos theta. Then del y upon del phi r cos phi sin theta okay beta. Next del z upon del r cos phi theta 0 phi minus r sin phi okay. Beta r sin phi common from this r common from this okay beta. And okay beta r sin phi common and r common from this, so we have sin phi cos theta sin phi sin theta cos phi. R sin phi common minus sin theta cos theta 0 okay. R कॉमन कर ले बेटा cos phi cos theta cos phi sin theta and minus sin phi
Okay beta, we have this one. Then solve beta. Sin phi, sin theta, cos theta, this. Okay. Then expand beta. We expand this. So we have, देखिए बेटा, this one. We have this one r square sin phi into, ठीक है बेटा, r square sin phi Jacobian. Next expand beta, expand r3 plus minus plus cos phi, this. Okay, we have cos minus cos phi sin square theta minus cos phi cos square theta. Okay beta. Next minus sin phi, this sin phi cos square theta plus sin phi sin square theta. Okay beta. Then r square sin phi, beta minus common, minus cos square phi sin square theta plus cos square theta minus sin square phi cos square theta plus sin square theta, minus common, we have minus r square sin phi. So Jacobian beta, the modulus, we have r square sin phi. So Jacobian किसके इक्वल आ गया बेटा पहला भाई, r square sin phi. So बेटा ये मैं सोल्व कर लिया बेटा सारे रिजल्ट. Then we start examples of spherical coordinates. Okay बेटा. First example, show that, example first, show that triple integration x square plus y square plus z square less than equal to 1, x square plus y square plus z square dv equal to 4 pi by 5. The region bounded by x square plus y square plus z square less than equal to 1. Okay beta. We put x, y, z in this one. We know that x square plus y square plus z square. We have beta x square plus y square plus z square equal to r square, because coordinate is there beta spherical. So solve कराएं किस दे इक्वल होगा r square, चेक भी कर सकते हैं बेटा. r square sin square phi cos square theta plus sin square theta r square cos square phi r square आ जाएगी बेटा वैल्यू. So this one is r square. Okay. So बेटा लिमिट्स मैं दसे इसमें प्रूव भी कितनी बेटा. फर्स्ट r square Jacobian r square sin phi, then dr d theta d phi, then r दी वैल्यू बेटा लास्ट रेडियस कितना है बेटा 1, 0 to 1 हो गया ना बेटा, देखो रे 0 and this one is 1, 0 to 1 and theta 0 to 2 pi, 5, 0 to pi. Then r square की वैल्यू कितनी होगी बेटा, r दी 5 upon 5 first because independent. So first 0 to pi sin phi d phi, 0 to 2 pi d theta 1, then 0 to 1 r the 4 dr. So we have minus cos phi 0 to pi, okay, 2 pi r the 5 pi 5, 0 to 1. We have 2 आ गया बेटा, cos pi minus 1, 0 minus 2 plus into 2 pi into 1 by 5. So 4 pi by 5. Okay बेटा. First example. Second बेटा, second example,
show that, sorry, evaluate triple integration dx dy dz upon root 1 minus x square minus y square minus z square over positive octane of the sphere x square plus y square plus z square equal to 1। बेटा पॉजिटिव ऑप्शन की गल कर रहे हैं ਆਪਾਂ। सो बेटा इस दे विच बेटा x y z वैल्यू पुट करांगे बेटा सारा कुछ उसदी। ओके देन x square plus y square plus z square r दी लिमिट की होगी बेटा पहले r 0 to 1 1 upon root 1 minus r square dr d theta d phi। so in positive octane means जो बेटा आप sphere देखो बेटा this one x y z this okay this one is phi। so only positive बेटा positive octane this x y z then this one phi lies between 0 to pi by 2 in x y देखो बेटा in x y plane only this portion because positive octane means x be positive y be positive in this reason। so theta lies between 0 to pi by 2 theta beta this one lies in xy plane so theta in only positive octane theta 0 to pi by 2। okay beta so we have 0 to pi by 2 so Jacobian रहेगा बेटा r square sin phi d phi। so 0 to pi by 2 dr d theta d phi। so sin phi d phi 0 to pi by 2 1 d theta 0 to 1 r square upon root 1 minus r square dr। okay we have this one beta। okay beta so we solve बेटा minus cos phi 0 to pi by 2 theta 1 0 to pi by 2 minus 0 in this one put r square upon root 1 minus r square dr। put in this case first solve this r equal to sin t dr equal to cos t dt limit r0 t0 1 pi by 2 okay r square sin square t 1 minus sin square t cos t dt this sin square t so beta we write 1 upon 2 into pi by 2 so we find pi by 4 okay beta वैल्यू कितनी आ गई बेटा पाई बाय 4 so beta this one minus cos pi by 2 0 minus 1 into pi by 2 into pi by 4 so pi square by 8 so we have कितना आ गया बेटा pi square by 8 so बेटा ये एग्जांपल सी बेटा अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स थे so thank you very much।